नमस्कार। आज आम एक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग आलोचना करबा। ठंडा देश में हिट वेव तांडव जलुछि जंगल मरुछंती लोके तरळिलानी पिचु रास्ता गछलता सबु किछि जली पड़ी पाउंस हेउछि। तापमात्रा एते मात्रा रे वृद्धि पाउछि कि विमान ठु नै ट्रेन गड़िबा मुश्किल होई पड़िछि। तेबे एहा कोनोसी अग्निकांड प्रभाव रे नुहे बरং असह्य ताती जगु हेउछि। ब्रिटेन स्पेन पोर्तुगाल भली देश रे देखिबा कि यूरोप रे वर्तमान हाहाकार स्थिति। पाणीपाग विशेषज्ञ अनुसार एभली तापमात्रा वृद्धिर कारण रहुछि जलवायु परिवर्तन। आगको एहा बड़ संकट भाव में छिड़ा होबार आशंका रही। विपज्जनक परिणाम केवल यूरोप नुहे पूरा विश्व को भोगेबाक पड़ी पारे। एहाकु नै हमर स्वतंत्र आलोचना। बरफ देश में बर्षुछि निया। एहाकु नै आज हम आलोचना करिबा। बरफ देश जोटी कि -डिग्री तापमात्रा सेठारे वर्तमान निया बर्षुछि। 40 डिग्री ऊपर तापमात्रा जनजीवन अस्तव्यस्त होई पलानी एवं स्थिति धीरे धीरे देखिबा कि चिंताजनक हेबाकु गलानी। गोटे पटे जंगल जलुछि लोके मरुछंती तरळिलानी पिचुरा गछलता सब किछि जळी पड़ी पाउंस हेगलानी एवं तापमात्रा एते असह्य भाव रे बढुछि जहा निश्चित भाव रे विमान ठु नै ट्रेन गड़िबा मध्ये मुश्किल होइछि एवं एहार एकमात्र कारण हेउछि जलवायु परिवर्तन। आगकु मध्ये गोटे बड़ संकट होई मध्ये ठिया होई पारे। विपज्जनक परिणाम केवल यूरोप नुहे पूरा विश्व को भोगिबाकु पड़िबो एवं एक कथा मध्ये कहिसंती कि विपज्जनक परिणाम केवल यूरोप नुहे पूरा विश्व भोगिबाकु पड़ि पारे। आमे देखुछु विश्व रे किभଳି भाव रे बन्या बात्या मरुडी भूस्खलन ए सब जेभଳି भाव रे बढ़ी बढ़ी चलीछि तार एकमात्र कारण हेउछंती तापमात्रा वृद्धि। तापमात्रा वृद्धि जगु ए सब देखिबाकु मिलुछि। तो आगकु ये विपज्जनक स्थिति होई सृष्टि हेबो। गोटे पटे असह्य गरम अन्यपटे किसी जंगल निया लगिबा जगु स्थिति अनायत हेलानी। जर्मनी रो पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम भाग में मध्य से समान स्थिति देखा मिली। ए पर्यंत 47,000 एकर जंगल पोड़ी पाउंस हो गलानी जहाँ तापमात्रा वृद्धिर अन्यतम कारण बोली कहा जाउछि। तो प्रति आम देखु 3 वर्ष थे ये असह्य ग्रीष्म लहरी रे ब्रिटेन में मध्य स्थिति देखा मिली। 2019 जुलाई में सर्वाधिक तापमात्रा सेठारे 38.7 डिग्री होइथिला। यूरोप रे जारी रहितबा ग्रीष्म लहर एबे उत्तर मुहा हेउथबा जणा पड़िछि। सेपटे फ्रांस कथा कहंतु कि नेदरलैंड कथा कहंतु पोर्तुगाल स्पेन ग्रीस भली यूरोपीय देश रे प्रबल खरा रही। प्रबल ग्रीष्म प्रवाह जारी रही। पोर्तुगाल ले पारा 47 डिग्री पार कर जाइछि जहाँ लोक माने को एक प्रकार चिंतार पकाई देछि। तो वर्तमान समय जेहेतु लोक माने गोटे अस्तव्यस्त भितर अछंती एते तापमात्रा जोटी कि बरफ वर्षे एवं सेठारे एभली स्थिति देखि लोके देखिबा कि गोटे आशंका भितर अछंती। फ्रांस रो लोकप्रिय पर्यटन स्थली ग्रांड सर्वाधिक प्रभावित होछि जोटी कि देखिबा कि प्रतिदिन हजार हजार संख्यार पर्यटकଙ୍କର समागम हुए। सेठारे देखिबा कि तापमात्रा वृद्धि समस्त को चिंतार पकाई देछि। सेपरि हिथ्रो कथा कहबा सेठारे सर्वाधिक तापमात्रा 40 डिग्री ऊपर रहुछि। सेठाकार लोक माने मध्य अनेक समस्यार सामना करूछंती एवं बढ़ुतबा तापमात्रा को देई चिंता मध्य एक प्रकार प्रकाश करूछंती। सेहीपरि पोर्तुगाल ले 47 डिग्री पारा टपिछि। लंडन ने देखिबा कि जोटी प्रबल ठंडा जोटी लंडन ने प्रबल ठंडा अनुभूत हुए। ये होछि बरफर देश जे कि लंडन ने 42.05 डिग्री सेल्सियस रही तापमात्रा। आपण अनुमान करंतु किभली खरा हेउथबो किभली सेठाकर लोक माने जो माने ठंडा सहित से माने अक्वेंटेड रहिछंती खाप खुआई निजको चढ़ीछंती। तो ये तापमात्रा वृद्धि समानकु किभली मात्रा रे गोटे संकट भाव रे से माने छिड़ा कराई दैछि एवं ये जो विपज्जनक स्थिति देखा मिली। ये विपज्जनक स्थिति केवल यूरोप नुहे पूरा विश्व को मध्य भोगिबाकु पड़ी पारे। तार एकमात्र कारण हेउछि जलवायु रे परिवर्तन। तो जलवायु रे जेभଳି भाव रे परिवर्तन होउछि ताहा होउछि यार मुख्य कारण। विपज्जनकर परिणाम सारा विश्ववासी भोगी पारंती। तेणु एबेठारु नजर देवार आवश्यकता रही। गोटे पटे असह्य गरम अन्य पटे जंगल निया जगु स्थिति धीरे धीरे अनायत हेलानी।
गोटे पटे जंगल जलुची लोके मरुछंती पिचु रास्ता तरलानी गछ लता सबु पाउंस होई गलानी लोके माने बाहर को आसीबा मध्ये मुश्किल होई पड़लानी तेबे कोनोसी अग्निकांड प्रभाव रे नुहे असह्य ताती जकू एभली स्थिति उपजिछि तो विश्व परिवेश एभली संकटजनक परिस्थिति रे गति करुवा बेले याको आखि आगे रखी मध्य मिलित जातिसंघ 1962 मसीह रे प्रतिवर्ष जून 5 तारिख को विश्व परिवेश दिवस रूपे पालन पई निष्पत्ति नैथिला एवं विश्व परिवेश दिवस रो मुख्य उद्देश्य थिला परिवेश समस्या को मानविक दृष्टिकोण रो विचार करिबा कार्य ताकू रूपांतरित करिबा आम देश रे मध्य 1950 मसीह रे भारत सरकार वन महोत्सव रो आयोजन करथिले उद्देश्य थिला वृक्षारोपण एवं जंगल सृष्टि तेबे सेही परिवेश एवं देखिबा कि परिवेश प्रति सब बेले गुरुत्व दिया जाउची लक्ष्य होची वनीकरण वृक्षारोपण परिवेश सुरक्षा एवं परिचालना वर्तमान समय आम कहीपर कि परिवेश सुरक्षा आम वर्तमान समय सबुठ बड़ आह्वान यही आह्वान सामना करने को हेब व्यक्तिगत भाव समष्टिगत भाव आम जनकर दायित्व नुहे समस्ते मिलमिशि आपको देखा कि सामना कर आवश्यकता रही व्यक्ति सचेतनता ही सफलतार असल चाबिकाठी परिवेश को जो मैंने भल पाँच परिवेश सुरक्षा कथा चिंता करुँच प्रत्येक व्यक्ति ए दिगरे सचेतन होगा जाना निहाती जरूरी तेणु प्रत्येक व्यक्ति वृक्षटीए लगाई ताको बंचाई रखि पारले एहा विश्व को ध्वंस मुखरु निश्चित भाव में रक्षा करिवार सहजतम उपाय किंतु जलवायु परिवर्तन जो सांघातिक प्रभाव देखा मिली द्रुत जन विस्फोरण शिल्प अभिवृद्धि सड़क निर्माण लोकों चाहिदा मेटाइबा जो घर सबु बसति निर्माण करा जाउछि ता द्वारा जंगल सबु कटा जाइछि फल वायुमंडल अम्लजान कमी विषाक्त अंगारकाम्ल गैस वृद्धि पाई ये विश्वर तापमात्रा को बढ़ाइबार लागिछि केवल सेतिक नुहे कल कारखाना निर्गत गैस अन्य रासायनिक प्रक्रिया एवं प्रतिक्रिया वायु जल मृत्तिका प्रदूषित होउछि जार सीधा सड़क प्रभाव पड़ुछि जलवायु उपरे नासा पक्षरु किछि दिन पूर्व एक फोटो जारी करा जायतिला सैटेलाइट आसीथिबा चित्ररु पृथ्वीर चित्र धीरे धीरे नीलरु नाली आड़कू जाउछि आपण अनुमान करंतु केते प्रदूषित हेलानी एवं केते प्रदूषण भितर रहिछि पृथ्वी एवं धीरे धीरे किभଳି भाबरे रंगरे परिवर्तन आसिलानी जा ये सारा विश्ववासी पई बड़ आह्वान एवं चैलेंज मध्य रहिबो तो बड़ कथा होउछि कि केतेबळे आमे देखुछु भूस्खलन होउछि ता सहित केवल विश्व परिवेश गोटे संकटजनक स्थिति रे गति करुछि तो ए क्षेत्र में आम समस्तंकर गोटे बड़ दायित्वबोध रहुछि आम परिवेश को आमे किभଳି भाबरे सुरक्षा देबा। हे बरफ देश में निया बर्षुची ए संपर्कित आलोचना करबा किंतु एक गुरुत्वपूर्ण खबर कि 2023 पुरुष विश्वकप हॉकी एफआईएच विश्वकप पई ड्रॉ सेरेमनी होची मुख्यमंत्री नवीन पटनायक लोकसेवा भवन कन्वेंशन सेंटर रे उपस्थित अछंती कार्यक्रम चली सीधा सड़क आसन देखिबा and media to today's ceremony. Thanking all. Jai Hind. Bande Utkal Janan. Thank you, sir, for your welcome address. And rightly said, the event in 2018 was a grand occasion. We can only imagine what it will be this time around. I would now request Mr. Zafar Iqbal, Member COA, Hockey India, to kindly step forward and say a few words. Even saying a few words is difficult for me, but anyhow, a good afternoon to all of you, and in particularly the Honorable Chief Minister of Odisha, Naveen Patnaik ji. We have on dais the President of the Federation of International Hockey, Mr. Saif Ahmed, my colleague, he's very much older to me, Dr. Qureshi Sahib, who is also part of the COA, and Mr. Terry, who is CEO FIH. And we have the Honorable Minister of State, Mr. Behera Sahib, and my young colleague, Dilip Tirki, who is very much here. We played together for Indian Airlines long back, and the Chief Secretary is very much here, and the man who is doing a lot of work is Vinil Krishna Sahib is also here on the dais.
So today is a very great day and a very important day prior to the commencement of the World Cup, because this is the time we will come to know who is placed where. And when we used to play at that time, we always see where we are placed, in which pool we are, and with whom we are going to play. So naturally, this is a very important day for all of us, and I won't take much time because only 3 minutes have been given to me. But one major point which I would like to focus is that the Odisha is holding the second time back-to-back the World Cup here, because no other city has ever held two consecutive World Cup in one city in the world itself. And also over and above, we are also holding the 4th World Cup here in our country, which is also a record. No country has ever conducted 4 World Cups. We had a first World Cup in 1981 and 82 in Bombay, where I was the part of the team, and later on 2010, and then 2018 here in Odisha, and naturally 2023 is again in Odisha. All the best, I would say, to the organizing committee. Naturally, they have to work hard for the success of the World Cup. And at the same time, I would also like to mention here that the government of Odisha is doing a great job for the development of hockey in our country and also in the Odisha. There is no doubt about it, because I have seen the performance of Indian hockey team. I'm sure this Indian team is capable of doing something special in the forthcoming World Cup. I'm sure our team is capable of making a podium finish. This is my personal desire, that we should have something out of it after a long time, because in the earlier stages, in 1971 World Cup Barcelona, we won the bronze medal. In 1973 Amsterdam, Holland, we were the silver medalists, though we had a good chance to win the gold medal. In the sudden death, we got a penalty stroke, but somehow we missed. It happens in the game of hockey and any other game. And also in 1975 we were the winners in Kuala Lumpur. So another chance we have here. I'm sure that India will come with flying color. Thank you very much for giving an opportunity to say a few words this time. All the best to every team. We are hoping for a very similar performance. Mr. Zafar Iqbal, as always, a man of few words, but when he speaks... तो बरफ देश में निया बर्षुछि एभली तापमात्रा वृद्धिर मुख्य कारण होउछि जलवायु परिवर्तन आगक गोटे बड़ संकट भाव में छिड़ा हेबार आशंका मध्य रही और विपज्जनक परिणाम केवल यूरोप नुहे पूरा विश्व को भोगेबाक पड़ी पारे कारण यूरोप रे वर्तमान जो स्थिति देखा मिली बरफ देश में निया बर्षुछि स्थिति धीरे धीरे चिंताजनक आड़क गलानी अनेक स्थान में जो देखिए कि -डिग्री तापमात्रा अनेक देश में सेठी वर्तमान 40 डिग्री ऊपर रही पारद जहां नहीं जनजीवन अस्तव्यस्त हो पड़ी जो लोक मैंने खाप खुआई रोते ठंडा परिवेश में ये प्रबल मात्रा गरम ये लोक मान चिंता पकाई अन्य एक कारण हूँ जंगल जलिबा जेहेतु जंगल बहु परिमाण एकर एकर हजार हजार एकर जलुछि तो ये कहीपर कि तापमात्रा वृद्धिर अन्यतम कारण आम ए संपर्क अधिक आलोचना करने को डॉक्टर एसएन पात्र अच्छा परिवेशविद और आम सहित जर्मनी प्रवासी भारतीय जोड़ी होती शुभश्री मंगराज आप उभय को स्वागत करुच्छ आलोचना को मु निश्चित भाव में शुभश्री मैडम को टिके प्राथमिक प्रतिक्रिया नहीं जीवी कहीं जेहेतु जर्मनी अच्छा केमती तापमात्रा रही केमती से असुविधार सामना करुछंती वर्तमान सेठाकर लोके शुभश्री मैडम मु आपण बाको आसीबाको चाहिबी एवं जानिबाको चाहिबी कि जर्मनी रे केमती वर्तमान गरम होउची एबे एई वर्ष जर्मनी रे बहुत ही अधिक गरम थिला माने मु एठू 2018 रु अछि 2018 रु 2022 जंके मु देखि आछि प्रति वर्ष गरम बढ़ी चलछि आ एटा बेसी हमकु एठी एथि पई फील होउछि काहेकि ना एठी साधारणतः घर मानकरे एसी किंबा कूलर
तर व्यवस्था न थाए कहीं एठिकार लोक यूज टू न थांती एते गरम को किंतु एते गरम बढ़ी चलछि जोटा कि हमको एते फील होछि जोटा इंडिया रे एते हुएनी कहीं हम पाखरे फैन एसी सबुर सुविधा थाए किंतु गोटे जिनस देखा चलछि कि एठिकार एसी आ फैन रो जो बिक्री एई वर्ष सबुटु हाईएस्ट हेछि ता छड़ा आपण जो कहले जंगल जळिबा मु जो रहुछि सेई पाखरे ही गोटे जंगल अछि जो थरे कि निया लागिथिला जो गोटे बहुत बड़ न्यूज हेतिला ए जर्मनी रे तो बिल्कुल जड़ा पड़ुछि माने एमती नै कि ऑन अ ग्लोबल लेवल माने साधारण लोकन को ही जड़ा पड़ुछि आ बेसी एथि पई कि होछि जो काइना लोक माने एठी बिल्कुल भी यूज टू नहंती गरम को 2018 मसीह आपण रहिले नि जर्मनी रे तो आर भीतर 2022 मसीह आ भीतर आपण एमती केबे गरम पूर्व अनुभव करिथिले कि एवं केते टेम्परेचर रहुछि 2018 जब मु आस्थिली टेम्परेचर सेबे 30 पाखपाखी जाउथिला गरम हबरे बेले बेले हीट वेव आसे एठी जेबे टेम्परेचर काफी बढ़ी जाए तो सेटा सब बेले थाए सेटा आगुरु भी थिला एबे भी अछि किंतु एबे कोन होछि ना से हीट वेव अधिक आसीबो को लागुछि माने बहुत कम फ्रीक्वेंसी रे बहुत अधिक हीट वेव आछि जोठी की माने एक्चुअली टेम्परेचर 40 पाखापाखी भी पड़ोची तो सेटा टिके फील होची समस्त ओके मैडम मु आशा करी आपण लगातार भाव रे आम सहित रुहंतु मु परवर्ती समय आसीबी एवं आपण को प्रतिक्रिया मत निश्चित भाव रे नेबी काहे कि ना ये जो स्थिति देखबा को मिलछि ठंडा देश रे जते बडे गरम होची निया बरसुची ताहा निश्चित भाव रे चिंताजनक डॉक्टर एसएन पात्र परिवेश विद आम सहित अछंती डॉक्टर पात्र वर्तमान समय जो स्थिति देखबा को मिलछि आपण देखंतु ठंडा देश जोटी -डिग्री रहे तापमात्रा सेठरे अग्नि वर्षा होची 40 डिग्री ऊपर पारद रहउची ये केते चिंताजनक देखो शुभश्री भौणी जहाँ कहते आम जाना कथा भारतीय मान जो यूरोप टूर जाती इवन टूर पैकेज से ठंडा सीजन हुए ना कारण एत प्रबल ठंडा बर्तमान 40 डिग्री 42 डिग्री इंग्लैंड रशिया यूरोपियन कंट्री होची ये निश्चित भाव में जो विश्व तापन एवं जलवायु परिवर्तन प्रतिफलन ता सांग को ये जो जंगल रे निया जलुची कारण से यूरोप रे बहुत जंगल अच्छी से जंगल रे निया जलिया फल जो बरफ रही से भी तलुची एपटे शिल्प खड़ी इत्यादि विभिन्न सहर जो चलप्रचल गाड़ी जहाँ को आम कहते अर्बन लाइफस्टाइल जोटा कहते शहरी जीवन रे बहुत अधिका जो प्रदूषित वायु निर्गत होची सेउडा हला अंगारकाम्ल गंधक आम्ल मिथेन जबखार आम्ल एमती जेते जेते तापर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जेते जेते बाष्प सब निर्गत होची से सबुड़ाक पृथ्वी चारिपर जो स्ट्राटोस्फीयर अच्छी सेठी रही गोटे ग्रीन हाउस गैस पर्दा सृष्टि करती जेहेतु अर्बन एक्टिविटी माने गाड़ी ट्रांसपोर्ट जीवा आसपा इंडस्ट्री धुआं साइड में सब एक्टिविटी बढ़ुची ता फल रे ए जो ग्रीन हाउस गैस पर्दाटा मोटा फल रे सूर्य को पाखर जो रश्मि पृथ्वी पृष्ठ पड़े जेती रश्मि व्यवहार हुए आ बाकी फेरी जाता जाए ना कारण ये जो मोटा सबुज गृह बाष्प पर्दाटा अटके दिए छाड़े ना तेणुक तार जो एटमॉस्फेयर जाओ कहू डॉक्टर पात्र जानिबा को चाहिबो पर्टिकुलरली निर्दिष्ट भाव रे यूरोप रे काहे के एभली स्थिति सृष्टि होची आईपीसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के प्रथम थर पई कहिले वायुमंडल रे जो जलीय बाष्प रहउची से मध्ये ग्रीन हाउस गैस वाला काम करे तो सबु कारण ए अवस्था जा हैची बर्तमान मुझा खबर काजु आपण टीवी विजुअल देखुली वर्तमान पीढ़ी अनुभव कर भविष्य जो आगामी पीढ़ी आसो पाखापाखि 90 भाग आगामी पीढ़ी अनुभव कर परिस्थिति जीवन कटाइबा पड़ो आम चली जा 2015 प्यारिस रे जोटा ग्लोबल क्लाइमेट एकॉर्ड जोटा को आम कह प्यारिस क्लाइमेट एकॉर्ड प्यारिस जलवायु चुक्ति सबु राष्ट्र समस्ते
ଏକ ଭାବରେ ସମଭାବରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ସେମାନେ କହିଲେ 2030 ସୁଦ୍ଧା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଯେତିକି ସବୁଜ ଗୃହ ବାଷ୍ପ ଗ୍ରୀନହାଉସ ଗ୍ୟାସ ଅଛି ତାକୁ 40 ଭାଗ କମେଇଦେବା 40% କମେଇଦେବା ଯଦି 1990 को बेस ईयर धरिबा माने आपण भाबंदु कल्पना तो ये वर्तमान समय डॉक्टर पात्रा आपण कहउचंती जो स्थिति वर्तमान समय सृष्टि होची तार गोटे बैड इंपैक्ट आगामी दिन रे निश्चित पड़िबो चैलेंजेस मध्ये रहिबो शुभश्री मैडम आपण पाखो आसबाक चाहिबी आपण देखंती यूरोप भड़ी शीत प्रधान महादेश रे जोंठी लोक माइनस भड़ी तापमात्रा रे रहंती सेठी 40 ऊपर जेतेबेले पारद रहउची ये गोटे अविश्वसनीय लागुची तो ये प्रकृति रे केते लोक समस्यार सामना करूछंती मैडम टिके कहिबे की एमती देखा गले एटा एठी समस्त को ही अफेक्ट करूची कहीं आपण जेमती कहले लोक एठी खरा दिन आसिले बहुत खुशी हो जाती कहीं खरा दिन बहुत कम टाइम पाई थाए टेम्परेचर बहुत ही ऑप्टिमल थाए तांकु बाहर बुलिया को बहुत भल लगे किंतु आजिकली लोक बाहर बुलु नांती कना बेसी खरा होची तो एटा तांको पई कि गोटे बहुत नुआ जिंस एक्सेप्ट करबा पई कि आ एटिकार गवर्नमेंट एई वर्ष जर्मनी गवर्नमेंट गोटे प्लान बाहर करथिले कि से माने सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑलमोस्ट फ्री कर देथिले लोक मानको पई जस्ट 9 यूरो रे ऑलमोस्ट फ्री कर देथिले जस्ट गोटे एक्सपेरिमेंट तांकर इकोनॉमिक एक्सपेरिमेंट या फिर एनवायरमेंटल एक्सपेरिमेंट जहाँ भी कहि परंदी ता भितरु गोटे भलो जिंस या हेतिला गोटे रिपोर्ट आछी कि सम मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड माने प्रिवेंट हेची माने जलवायु को जीवाकू किंतु एटा बस गोटे ही माने गोटे स्टेप एमती हमको बहुत सारा स्टेप नबा को पड़िबो जहाँ डॉक्टर पात्र कहले कि हमको निज पई नहले एटलीस्ट हम नेक्स्ट जनरेशन पई कि जदी एई ग्लोबल वार्मिंग को टिके कंट्रोल रे आनियार अछि तो एमती हमको बहुत सारा स्टेप नबा को पड़िबो तो आपण मैडम जेमती कहउतले कि आपण जोठी रहउचंती से पाखरे मध जंगल निया लागिथिला तो ए पछरे जंगल निया लागिबा पछरे कारण कोन एवं सेठाकर प्रशासन वर्तमान कोन सब स्टेप नेउचंती हाँ तो गोटे कारण जोटा मु डायरेक्ट देखिछि जोटा मु जेबे लास्ट शीत दिन रे विजिट करथिली मु देखिली सेठी बहुत सारा डिफॉरेस्टेशन आगुरु हेगिथिला तो से माने सब गछ से एरिया रो काटी देथिले जोडा कटाइनी All friends who are present here, I'm sure we're all looking forward to the hockey match here, which is most prestigious, and all of us together will make it a tremendous success. Thank you. So now, India being in Pool D, the next top 3 teams according to the FIH World Ranking have been allocated as followed. Pool C, World Ranking number 3, it's Netherlands. Pool B, based on the World Ranking number 2, is Belgium. And then Pool A, number 1 in world ranking is Australia. Just for clarification, we're talking about world ranking which has been stopped and which has been looked at after Asian qualifiers in June this year. So it's not the 2 days qualifier, but we had to stop it at a certain stage, and that was done in June this year after the Asian qualifiers. So now, the first teams ranked between 15 and 23 on the world ranking will be drawn to complete row number 4 of each pool. Those teams are ranked 15th, South Africa, ranked 16th, Wales, ranked 17th, Japan, and ranked 23rd is Chile. The first team will be placed in Pool D in position 4.
The second team drawn will be placed in Pool C, position 4. The third team will be in Pool B, position 4. And the fourth team will be in position 4 in Pool A. Time to get started then, and I would request Dr. S.Y. Qureshi, member COA Hockey India, to please come forward towards the pots and please shuffle the balls in pot 1. So this is now for position D4. And this is Wales. Wales will join India in Pool D. Wales have been making waves in Europe. They are doing what Ireland did, certified a decade ago, upsetting the established order. We are looking forward to having them in Bhubaneswar, Rourkela. I would request Dr. Qureshi to please draw the ball one more time in pot 1. This is now going to be for Pool C, position 4. And this is Chile. Chile joins Netherlands in Pool C. A new power is rising in the Americas. It is Argentina and Chile that have made it to the World Cup. Chile are going to debut for the first time in Bhubaneswar, Rourkela as finalists at the Pan Am Cup. We wish them all the very best and look forward to having them here. Thank you, sir. Thank you, sir. I would request Sri Suresh Chandra Mahapatra, IAS, Chief Secretary and Chief Development Commissioner, Odisha, to please come forward towards the pots and shuffle the balls in pot 1. So again, this is now for position B4, Pool B. And this is Japan. I would request Sri Mahapatra to please draw the balls one more time in pot 1. So that is now the final one for position A4. And yes, that is South Africa, who joins Australia in Pool A. They were placed together at the Commonwealth Games just over a month ago. Australia and South Africa will square off again at the World Cup. Exciting hockey with exciting players is what we expect from South Africa. And let's see if they can better their showing from 2018. Thank you, sir. Thank you. So now we proceed to the draw of the third row. We will be composed by the following teams ranked between 9 and 13. And the teams are number 9, ranked number 9 is Spain, ranked number 10 is Malaysia, ranked number 11 is France, and ranked number 13 is Korea. The first team will be placed in position 3 in Pool D. The second team drawn will be put in position 3 in Pool C. The third team will be placed in position 3, Pool B, and then the fourth team will be placed in position 3, Pool A. I would request Sri Tushar Kanti Behra, Honorable Minister, Sports and Youth Services, Odisha, to please come forward towards the pots and shuffle the balls in pot 2. So who is going to join India in Pool D, position 3? Spain. They have taken a new direction under new leadership. What does Max Caldas have up his sleeve? It's not going to be an easy game. And Pool D is shaping up rather nicely. I would request Sri Tushar Kanti Behra to please draw the balls one more time in pot 2. So this is now being for position C3. Joining Netherlands and Chile. It's Malaysia. Malaysia
at a very, very tough Asia Cup, Malaysia managed to make their mark and have been here. The last time India won a World Cup, it was in Malaysia at the Merdeka Stadium in Kuala Lumpur, 1975. Malaysia will be hoping that luck favors them when they come here to Bhubaneswar and Rourkela in 2023. I would now request Mr. Saif Ahmed, Acting President FIH, to please come forward towards the pots and shuffle the balls in pot 2. So now we're going for position B3, joining Belgium and Japan. Korea joining Belgium and Japan. Never an easy game when you play South Korea. Known for their fitness, organization, and delivering on the big stage. Korea will join world champions Belgium, Asian champions Japan in Pool B. I would request Mr. Ahmed to please draw the balls one more time in pot 2. And now again, it's for position A3, joining Australia and South Africa, which is France. France joining Australia and South Africa. Whenever France come to India to play a Junior World Cup, they do exceedingly well. Not to forget how well they did right here in Bhubaneswar just over a year ago. Can they translate that sort of form to the senior level? Well, we wish France and their team all the very best. Thank you. And now we come to the last row. The second row will be composed by the teams ranked between 5 and 9 of the world ranking. Number 5 is Germany, number 6 is England, number 7 is Argentina, and number 8 is New Zealand. Same principle, the first team will be placed in Pool D, position 2, the second team will be placed in Pool C, position 2, the third team will be placed in Pool B, and then the last one will be placed in Pool A, position 2. So the same principle as before. I would request Shri Dilip Tirki, Chairman, Hockey Promotion Council of Odisha, to please come forward towards the pots and shuffle the balls in pot 3. So now you have the mission to draw the last team in the pool with India. No pressure. So, England is joining India, Spain, and Wales in Pool D. Whenever England play India, one thing is guaranteed: a lot of goals, a lot of excitement. The last time these two teams played at the Commonwealth Games, we had an 8-goal thriller. Well, let's hope this time India not only has a thriller of a game, but wins that game against England. And that's how Pool D finishes with England as the last team. I would request Sri Tirki to please draw the balls one more time in pot 3. And that will be now for Pool C, position 2, joining Netherlands, Malaysia, and Chile. And this will be New Zealand is joining Netherlands, Malaysia, and Chile. The other team, the Giants of Oceania, along with Australia, will complete Pool C. Not an easy pool, and I can see that after the Netherlands, it is there for the taking. It will be interesting to see which team competes with the Netherlands to go through to the quarterfinal. I would now request Shri Zafar Iqbal, member COA Hockey India, to please come forward towards the pots and shuffle the balls in pot 3. So, and this now will be for position B2, joining Belgium, Korea, and Japan. Germany is joining Belgium, Korea, and Japan.
Two European powerhouses placed together in Pool B. It was Germany who was drawn with Netherlands in 2018 at the Bhubaneswar World Cup. This time they have another European giant to fight with. That's going to be Belgium. I would now request Sri Iqbal to please draw the balls one more time in pot 3. And that is now for the last open position, which is Pool A, position 2. And that can not be anybody else then. Argentina, yes. That's good. Argentina joining Pool A, Australia, France, and South Africa. The giants of Pan America, Argentina, very recently crowned Olympic champions when it was held at Rio. 2018 was not the best tournament for them, but they have now a very exciting mix of talent and experience. Argentina, never an easy team. And that is how the draw concludes for the Hockey World Cup 2023, Bhubaneswar 2023. Wow, some exciting matches to look forward to. So thank you, distinguished guests. Thank you, Odisha. Thank you, Honorable Chief Minister. Looking forward to see you all at the World Cup. I'm sure the teams have now some homework to do to prepare themselves, knowing to whom and who they will play. And again, as I said, last time in 18 it was a milestone for an FIH event, but this time it will be another big milestone, having it in two fantastic venues in Odisha. Thank you. Looking forward to see you all there. Thank you. बरफ देश जिते निआ बर्षुची जहाँ को लेकिन चिंता बढ़ा स्वाभाविक कथा जो माइनस डिग्री तापमात्रा रहे से जंगल जलुची से तापमात्रा बढ़ुची तापमात्रा 40 पार करुच्ची जहाँ समस्त को एक प्रकार चिंता पकई विशेषकर परिवेश मैंने चिंता प्रकट कर डॉक्टर पात्र मुझे आप आसवा चाहिए आम देखीचु कि वर्तमान समय दक्षिण गोलार्धरे किभली भाव में आंटार्कटिकारु बरफ तरलुची स्थिति चिंताजनक होती उत्तर गोलार्धरे आप देखो अधिक तापमात्रा परिवर्तन होती आ पछरे कौन रही प्रमुख कारण आम जो अल्प समय पूर्व आलोचना करते बर्तमान यूरोपियन देश मानक यूरोपियन राष्ट्र मानक जो समस्या है मानवकृत जहाँ को आम कहवा एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज कहती आधुनिक जीवन शैली अधिका शक्तिर आवश्यक शक्तिर उत्स हूँ कोयला नॉर्वे गोटे कंट्री जोटा कि स्कैंडिनेवियन कंट्री शक्तिर उत्स बर्तमान हाइड्रो कि यूरोपियन कंट्री जमी भारत वर्ष सब शक्तिर उत्स हूँ कोयला कोयला जालिया फल से जो विभिन्न प्रकार बाष्प सृष्टि होती जहाँ को आम कहे सबुज गुड़ बाष्प जहाँ आगुरी कहती जैवक्षार अम्ल गंधक अम्ल अंगारक अम्ल मिथेन इत्यादि से अधिक अधिका सृष्टि होती तेणुक बर्तमान प्यारिस चुक्ति पर यूरोपियन राष्ट्र मध्य अनुभव कले आम विकल्प जहाँ को आम कह अक्षय शक्ति कहले नवीकरण शक्ति जहाँ हूँ सौर शक्ति पवन चालित शक्ति जैविक शक्ति ओशन करंट विभिन्न प्रकार उत्स शक्ति संग्रह कर जहाँ को आम एनर्जी ट्रांजिशन बोली कहवा से उद्यम जारी रखिंट तेबे आम देखबार कथा जे प्यारिस चुक्ति पर पूर्व बहुत चुक्ति चुक्ति पर जे मनुष्य पिछा जी सबुज गृह बाष्प निर्गत हवा कथा से कमी कि ना ष्ठ भाव में मुझे कमी ना एयर क्वालिटी इंडेक्स जोटा आम कहूचे एयर क्वालिटी इंडेक्स गोटे संख्यार निर्णय कराए 50 रु कम रही भल से सब गुड़ाक 80 100 एयर क्वालिटी इंडेक्स भी रोचे जंगल पोड़ी कथा जो कहुची जदि उत्ताप बढ़ गछपत्र निआ लगिले निश्चित भाव में हुए जल निआ लगे विभिन्न कारण अच्छी मानवकृत हो पारे आउ कौन कारण हो पारे एपटे जंगल जलुची सेपटे समग्र विश्वर उत्ताप बढ़ुची एपटे प्राकृतिक विपर्य बढ़ुची एपटे लोक मानकर जो जीवन शैली कौन सी परिवर्तन आसुना
जीवन शैली परिवेश धर्मी हवा कथा परिवेश धर्मी हो नहीं। डॉक्टर पात्र आपण देखंतु अमेरिका रे जेबळे भापरे जंगल निया लागुची स्पेन ने मध्य देखबाक मिलिछि आपण चाइना रे मध्य फ्रांस रे मध्य जंगल जळुछि जा वर्तमान समय चिंताजनक केवल जंगल जळुनी पाकिस्तान ने जेबळे भापरे जो बन्या आसी अपन 2 दशंधि पर एते बड़ बन्या हजार हजार कोटी क्षयक्षति होइछि तो ये सब जो परिवेश रे जो बड़ परिवर्तन देखबाक मिलिछि जाको नै कि समस्त मध्य चिंता प्रकट करिसथि जानिबा को चाहबो कि आगो को गोटे बड़ संकट भापरे छिड़ा हबो कि हम सामने रे विपज्जनक परिणाम केवल यूरोप नुहे पूरा विश्व को आगे को भोगी पारे कि एवं ए दिग को हमको कौन हमको स्ट्रेटेजी करबा को पड़िबो आपण जहा कहले मु आउटी की प्रांजल भाबरे कहबो को चाहूची 20 शताब्दी रे उत्ताप 0.8 डिग्री बढ़ीतिला 21 शताब्दी शेष बेल को आशंका करे होची 6 डिग्री सेंटीग्रेड उत्ताप बढ़िबो विश्व समूह चिंता करछंती 6 डिग्री को बढ़िया को न देगी 2 डिग्री सीमित रखिबे जदि संभव 1.5 डिग्री सीमित रखिबे अब केमती सीमित रखिबे जो जो प्रक्रिया पृथ्वीर उत्ताप बढ़ाइबार सहायक हुए से प्रक्रिया को कमेया पड़ो से प्रक्रिया हूँ विकल्प शक्ति जोटा पवन चालित इत्यादि कहली जहाँ आप पाकिस्तान कथा कहले यूरोप कथा कहले भारत वर्ष आपण जदि 50 वर्ष 100 वर्ष तलर बन्या बर्तमान बन्या तुलना करेंगे सबू देश टिके वर्षा बर्तमान बन्या होची जहाँ आम कहे फ्लाश फ्लड सबू नदीर गभीर कमिला नदी गुड़ा सब अगभीर होची कारण जो नदीर उत्पत्ति जो जंगल से भरपूर जंगल थाए जो भरपूर जंगल थाए मृत्तिका को से बांधिक रखे मृत्तिका क्षरण हुए नहीं जेहेतु जंगल को प्रबल भाव में कटा जाउची मृत्तिका को बांधिक रखापी आउ किए नहीं मृत्तिका क्षरण होची ता फल नदी कहतु समुद्र कहतु विभिन्न जलाशय डैम कहतु सबुथे पटुमाटी पशिकी जल धारण शक्ति कमुची तेणु यही बन्या आगुरी भी होता कि बर्तमान टिके वर्षा बा टिके बरफ तले बन्या होची तार प्रमुख कारण होची जलाशय नदी सब अगभीर हो गलानी तेणुक आमको किसी बहुत किसी करिवार अछि केवल मनुष्य प्रभावित होना विभिन्न प्रकार जीव जंतु प्रभावित होती विभिन्न प्रकार उद्भिद प्रभावित होती गोटे हिसाब रे जाना जाइछि 90 वर्ष तले गोटे जीव निश्चिंत होगापाई पाखापाखि 40 रु 50 वर्ष लगुला बर्तमान प्रति घंटे 3टी उद्भिद बा प्राणी जीव विनष्ट होती विलुप्त होती यार कारण कौन जेकोसी जीव प्राणी बा उद्भिद बंचिया हेले निर्दिष्ट उत्ताप निर्दिष्ट जलवायु आवश्यकता रही जेहेतु जलवायु द्रुत परिवर्तन जलवायु परिवर्तन होता ऐतिहासिक भाव में जो आम विवर्तनवाद रही जलवायु परिवर्तन होता प्रतिबार होता धीरे धीरे होता बर्तमान मानवीय हस्तक्षेप फल जलवायु द्रुत परिवर्तन क्षिप्र गति होची आपण समुद्र पतन बर्तमान कह बढ़ समुद्र पतन बर्तमान ओडिशा रे भारत वर्ष सबुठी बर्तमान किसी मीटर बढ़ी आग को एभली समस्या आसो समुद्र पतन बढ़ समुद्र पतन बढ़िले से पानी समुद्र पानी जीव पड़े समतल अंचल को पशि आसो समतल अंचल पशिले कृषि प्रभावित हम जो कृषि जमी लुण पानी माड़ से कृषि हम ना जंगल बढ़ वन्य प्राणी सब फंक्शन थे जो मैंने से बुढ़ी अंचल रही उपकूल अंचल रही सब स्थानांतरित हे अर्थनैतिक व्यवस्था भी प्रभावित हम ये सब दृष्टि गोटे मनीष विज्ञान बड़े देखु जिते जगत चिड़िबार प्रयास जारी रखी डॉक्टर पात्र विकल्प व्यवस्था कौन ग्रहण कर नुआ टेक्नोलोजी केमती व्यवहार कराद्वारा आम कि मात्रा को रोकी पारिबा से कथा मु कहूची आपणकर मिलित जाति संघ प्रथमे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल करथिले तार अवधि 2015 सरला 2015 रु 2030 पाई 15 वर्ष अवधि रे 17टी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल निरंतर विकास लक्ष्य मिलित जाति संघ निर्णय करिछि सेही 17टी
मिलित जाति संघर जो निरंतर लक्ष्य निर्णय कराई से सबू राष्ट्र मुख्य केवल कहलबनी राष्ट्र प्रशासन कहलबनी जनसाधारण मध्य समभागितार सामिल हवा दरकार। आम ये महात्मा गांधी को मन पकेगा ये देश हूँ महात्मा गांधी देश। आपण जीवन शैली आपण घरे 10टा लोक थे 10टा कार कौन दरकार 2टा लोक चलने गोटे 2टा बखरा भी चल पारे जहाँ को आम कहे जीवन शैली। आम जो घर तैयारी करूँ घरटा आज्ञा 40% हूँ ग्रीन हाउस गैस उत्स। आपण घर टी एभली डिजाइन करेंगे जहाँफल प्राकृतिक जो वायु प्राकृतिक भाव में जो आप आलोक उपलब्ध होची ताको व्यवहार करेंगे अधिक एयर कंडीशन व्यवहार करेंगे। जो शुभश्री जो झील कहते इंग्लैंड रे आज्ञा इन्वर्टर मिले ना इंग्लैंड रे कई एसी व्यवहार करते नहीं निर्दिष्ट समय निर्दिष्ट गोटे 2टा सीजन व्यवहार करते। सो जेते गर्म हम से एसी व्यवहार कले अधिक शक्तिर उत्स आवश्यक। तेणुक आपण जंक फूड खाइबे नहीं आपण जीवन शैली सरल करेंगे जो आवश्यक ना से मोटरयान चलेबे नहीं एसी व्यवहार करेंगे नहीं अधिक जंगल सृष्टि करेंगे। प्रति राष्ट्र परिवेश सुरक्षा पई डॉक्टर पात्र विश्व स्तर जो प्रयास करा जाउची प्रचेष्टा करा जाउची आरंभ होईची ता केवल कोनोसी संगठन बा प्रतिष्ठान जरिया रे संपूर्ण सफल हेबा असंभव। तेन हम समस्तंकर सहभागिता रहिबा दरकार। ये आपन कोन लागुची वर्तमान समय सारा विश्व रे जे प्रकार स्थिति देखिबा मिलिची परिवेश सुरक्षा वर्तमान समय केते बड़ आह्वान। परिवेश सुरक्षा ही एकमात्र आह्वान। हम समग्र विश्व रे विभिन्न प्रकार वर्तमान चुक्ति रही देखु जो द्वितीय विश्व युद्ध पर मिलित जाति संघ है यूनाइटेड नेशंस अपन बर्तमान यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम से परिवेश पर कार्य कर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जितेबाला 1999 ओडिशा रे महाबात्या है सेतबेले आमर ज्ञान कौशल एत उन्नत धरण नथिला आम पाखे संवाद पहुँचार डेरी होता। वर्तमान प्रति मुहूर्त आम जापे जलवायु किभली हम एवं देखो आज काली भी येलो वार्निंग रेड वार्निंग सब दिखाई जिले में वर्षा हम एतिक जिले में झड़ी हम ये सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर ज्ञान कौशल जो विकास घटुची तार उत्तम भाव में प्रयोग करने दरकार एवं आमे सचेत रहा दरकार। आप स्कूल ठार आरंभ करी कॉलेज ठार आरंभ करी जेते ऑफिस जहाँ सब क्षेत्र में एकदम ठीक कथा कहते 1999 मसीह महाविनाशकारी महाबात्या को आम केबे भी भूली पारिबा नहीं। विगत दिन में जापान में जो भूमिकंप सुनामी तार जो प्रकृतिर क्रूरता और परिवेश जो प्रदूषण भयावहता तार ज्वलंत उदाहरण मध्य एवं प्रति मुहूर्त में मनीष देखिए कि से महाप्रलयर आशंकार आम गोटे शंकित अवस्था अच्छे आम गोटे अतिष्ठ अवस्था अच्छे आम आग को किभली भाव में क्रूरता देखाइब एवं किभली धारण करिब ए जो स्थिति ताहा मध्य आम कल्पना बाहर। तो ए क्षेत्र में परिवेश सुरक्षा निहाती भाव में जरूरी रही आवश्यकता रही आपन कौन लगुच ए क्षेत्र में सचेतनतार मध्य आवश्यकता रही। मोट उदाहरण देवी 1999 जो महाबात्या है भितरकनिका अंचल रे किछि लुणा जंगल थिला जाको हम मेन ग्रुप कहू तुलनात्मक भाव में सेठी क्षति कम होता। समग्र विश्व रे जते बेलाभूमि अच्छी सेठी सब सामुद्रिक जंगल थाए जे सामुद्रिक जंगल प्राकृतिक भाव में एक आड़ुआल एक कांथ जहाँ माड़ी आसब ना प्राकृतिक विपर्य बा आपण जहाँ लहरी कहतु जहाँ कहतु आमे परिवेश निश्चित भाव में परिवेश सुरक्षा वर्तमान समय एक बड़ आह्वान एवं ए आह्वान सामना करने को व्यक्तिगत भाव आह्वान को सामना करने को समष्टिगत भाव में परिवेश सुरक्षा पाई विश्व स्तर में जो प्रचेषा कर आरंभ होती केवल गोटे संगठन बा प्रतिष्ठान जरिया संपूर्ण भाव में सफल होगा असंभव। तेणु व्यक्तिर सचेतनता ही यार सफलतार असल चाबिकाठी। तेबे आम निश्चित भाव में परिवेश को भल पाउथुबा एवं यार सुरक्षा पाई चिंता करुथुबा प्रत्येक व्यक्ति निश्चित भाव में जानिबा आवश्यक।
आवश्यक कहीं सारा विश्व में जो प्रकार चिंताजनक स्थिति देखा मिलानी बरफ देश में देखा कि अग्नि वर्षा बर्षुची तेणु ए दिगरे आम निश्चित भाव में तुरंत पदक्षेप नेबा गछटिए लगाइबा सचेतन रहिबा। धन्यवाद डॉक्टर पात्र आपको बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त होची आलोचना को ये रखा। नमस्कार।